Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope all of you are fine at your home. Here we are going to dive into science. Science is knowledge that we get from observations and experiments. It actually provides understanding of the world and how it works. We are going to understand a discipline of science, that is chemistry. Chemistry, it is a branch of science. इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? इसके अंदर हम मैटर को अंडरस्टैंड करते हैं. अब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा मैटर. एक्चुअली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों मैटर को अंडरस्टैंड करते हैं और उसको स्टडी करते हैं, बट दोनों का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है. फिजिक्स में आपने अंडरस्टैंड किया मैटर और रिलेशनशिप ऑफ एनर्जी, उनका इंटर रिलेशनशिप मैटर और एनर्जी दोनों को आप अंडरस्टैंड करते हैं, उनके रिलेशनशिप को, और उनको डिटेल में स्टडी करते हैं. लेकिन केमिस्ट्री में इसका अंडरस्टैंडिंग और इसकी जो स्टडी है वो डिफरेंट है. इन केमिस्ट्री वी स्टडी निटी ग्रिटी ऑफ द मैटर. Here we study composition, structure, properties, and reactions of matter. All these aspects we study in chemistry. Okay? With the development in science and technology, especially in the field of chemistry, we see that it plays a vital role in our life. If we see the petrochemicals, medicines, drugs, soap, detergent, and then paper, plastic, then paints and pigments. In agriculture, we have insecticides and pesticides. All these make our life easy. Okay. Now, with the development in industry, there are positive aspects that we have already discussed. Now, I would like to throw light on these results that are produced with the development of chemistry in the industry. Chemical processes added toxic waste, contaminated water, and polluted air that make our environment polluted. However, chemists do not leave us with these detriments that are in our environment. They play a vital role. Chemists provide us knowledge and techniques to improve our health, to improve environment, and explore to conserve the natural resources. With the advancement in the field of chemistry, the knowledge piled up, and we have to divide this knowledge into different fields. Now here we discuss only three branches: physical chemistry, organic chemistry, and inorganic chemistry. In physical chemistry, chemists understand the relationship between the composition, properties of the matter along with changes in them. First of all, we should understand the matter. Matter consists of particles that we name atoms, ions, and molecules. And this matter consists of three states: gas, liquid, and solid. In physical chemistry, the chemists understand what is the structure of atom, how the atoms combine together to form molecules, and how the physical states of the matter they get interchanged with each other, and what is the effect of temperature and radiation on the matter. Then we move ahead to the organic chemistry. Organic chemistry
It is the branch of chemistry that deals with the covalent compounds of carbon and hydrogen and their derivatives. Derivatives are actually the compounds that are derived from the compounds of carbon and hydrogen. In simple words, if we say, if we replace the hydrogen of this compound by any other atom like chlorine, like other bromine and any other atoms, then it becomes a new compound and it will be known as derivative of carbon and hydrogen, that is hydrocarbon. The organic chemist studies the structure and properties of these covalent compounds of carbon and hydrogen, and this field takes into account, that is its scope is in the field of petroleum, petrochemicals and pharmaceutical industry. Okay, now we are going to understand inorganic chemistry. Inorganic chemistry, it is also a branch of chemistry in which we study all the elements and compounds. यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हम ये डेफिनेशन शुरू करेंगे all the elements and compounds, then organic chemist उन्हें प्रॉब्लम होगा. वो कहेंगे भाई आप लोग ये तमाम एलिमेंट और कंपाउंड स्टडी कर रहे हो, हम भी तो कंपाउंड स्टडी करते हैं, आप हमारी फील्ड में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो. तो यहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम लोग तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारी बात इनकम्प्लीट है बिकॉज हम आपकी फील्ड को एक्सक्लूड करने जा रहे हैं. तो हम पूरी डेफिनेशन जब बोलेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सेपरेट हो जाएगी. वो कैसे? वी स्टडी ऑल द एलिमेंट्स and compounds except compounds of carbon and hydrogen that we call hydrocarbons and their derivatives. देखें यही चीज हमने यहां डिस्कस की, covalent compounds of carbon and hydrogen and their derivatives. जब हम एक्सेप्ट का वर्ड यूज करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस सारे पैराई में से वो खारिज हो जाएगी और हम इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे. हम एक दफा फिर डिफाइन करते हैं. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एक्सेप्ट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स. अब हम देखते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट जो है इसको इस फील्ड को कैसे लेके चलता है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट तकरीबन हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को टच करता है. स्पेशली दे आर इन्वॉल्व इन ग्लास इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, सिरेमिक्स एंड मेटलर्जी. यहाँ पे मेटलर्जी क्या है, इसको हम इंशाल्लाह आगे चल के डिटेल में पूरा चैप्टर इस पे स्टडी करेंगे. एक आप इसको सिंपल वर्ड्स में ये समझें कि मेटलर्जी ये एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है. इसके अंदर आप स्पेसिफिकली क्या करते हैं कि आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. कहां से? फ्रॉम दी ओर. ओर क्या है? ये मिक्स्ड स्टेट में जो है आपकी मेटल और उसके साथ बहुत सारे दूसरे अर्थली इम्प्योरिटीज और इस तरह की बहुत सारी चीजें उसके साथ अटैच होती हैं जिससे हमने इसको सेपरेट करना होता है. Okay students, it was all about today's lecture. We are now going to mark the basic areas that we have to learn. Number one, we will discuss, we will learn the definition of chemistry, that is on line number 2. The branch of science, it is a branch of science which deals with the composition, structure, properties and reactions of matter. Then
फर्स्ट ब्रांच दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, इसकी डेफिनेशन आप मार्क करेंगे। इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगी लाइन नंबर फर्स्ट लाइन पे, दैट डील्स विद द, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कंपोजिशन प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन प्रॉपर्टीज, नहीं इसको दोबारा करेंगे यहाँ पे कटिंग। Okay students, it is all about today's lecture. We will learn definition of chemistry on mentioned on page number 2, then definition of physical chemistry, its scope, definition of organic chemistry and its scope, and then definition of inorganic chemistry and the scope, that is the area that it covers. Okay students, may Allah protect you and stay safe at your homes, and Allah Hafiz.